we have done unit of K. Then we were looking in the experimental data, how to get the rate law expression. When we say rate law expression, we explicitly want the order of reaction basically. है ना? We need the order of reaction, and from order of reaction, we will get to know the complete rate law expression. Let's start today's class. Let me get a question. कहाँ है सवाल नहीं मिल रहा हमें जस्ट अ सेकंड Please write this question. This is let me tell you, in the experiment one, they have given experiment one in the first column. The second column they have given the initial concentration of NO2, and in the third column they have given the initial concentration of F2, and in the fourth column they have given the initial rate of reaction, similar to the question we did in the last time. राबिया एंड साद, सवाल हो जाएगा? Yes, sir. Saad, what about you?
सर मैं अभी जरा हल्का रिवाइज करूँ सर, आई रिवाइज फॉरगॉट। करके आना। ठीक है सर, जब भी आप क्लास में आइए तो पिछले क्लास में जो कुछ हुआ है ना उसको रिवाइज कर लिया कीजिए। एंड स्पेशली इफ द क्लास इज ऑन सैटरडे, बिकॉज लास्ट टाइम संडे को आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद बीच में कभी पढ़ा आपने केमिस्ट्री? नोटबुक खोल के देखी आपने? नहीं। फिर कैसे आएगा साथ, सब भूल जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा क्लासेस का। आई एम रियली सेइंग दिस साथ वेरी सीरियसली, कि जी व्हेन आई से सर। कुछ फायदा नहीं होगा, देन आई मीन कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, नॉट इवन अ जी बिट ऑफ डूइंग ऑल द क्लासेस। उसमें बस ये करिए आप, फिर मतलब नोट्स लेके पढ़ लेंगे, आखिर टाइम में जब एग्जाम आएगा बस सेम सेम इफेक्ट होगा, क्लासेस करने का नहीं करने। ठीक है, तो क्लास जब जी कर रहे हैं आप तो प्लीज उसको रिवाइज किया कीजिए। क्लास में जैसे खत्म होगी क्लास, 15 मिनट बैठ के देख लिया एक बार क्या होंगे। ठीक है, और क्योंकि सैटरडे, जब सैटरडे को क्लास है, संडे को रिवाइज करने की उतनी जरूरत नहीं है आपको, है ना? लेकिन जो संडे को जी हुआ है उसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ क्लास आफ्टर 5 डेज। ठीक है, चलिए। या काव्या आप तो सवाल कीजिए, एंड साथ आप ट्राई कीजिए रिवाइज करने का, फिर से इसको ट्राई करने का। जी सर।
Yes, Rabia. Done or not done? No, it's not done yet. Are you stuck or या फिर आप कर रहे हैं? I'm still doing it, sir. So you're not stuck, right? Just let me know if you're stuck. Rabia, 2 more minutes and then you will send me whatever you have done, okay? Okay, sir. Okay, Rabia, send me now whatever you have done till now. Sir, I'm not getting the value of B actually. Sorry? I'm not able to get the value of B. I got A value. Got the value of A. Just a second, let me bring my Yes, earphone. sir. I don't. What is A? There is no A ना. आप देखिए, अगर आपने खुद से कुछ रखा है ना वैल्यू को A, जैसे मान लिया आपने कुछ मान लिया है, तो आपको बताना होगा ना what is actually, because in the question I can't see anywhere A, right? Yeah, sir, I'll send it right now. I'll send it. Answer sheet.
Rabia, I'm waiting for your answer. आपको कुछ समझ में आया? 7 कैसे होगा, नहीं होगा? 7 आपने रिवाइज किया, कुछ समझाया कैसे होगा, नहीं होगा? समझ में आ गया कैसा करते हैं, बट सॉल्व करे जैसा नहीं है अभी. Like I'm not able to solve. I know कैसा Tell करते me हैं. how. Tell me how. Yes, sir. First we will check same कौन सा concentration कौन सा same है. हम्म. So one और two का concentration same है. ठीक है. So we'll take those two reactions, right? I will take experiment Yes, 1 sir. and experiment 2. Right? Yes. So in experiment 1, I can write the general rate of reaction as R is equal to K into the concentration of NO2 to the power of, let us suppose, M and N. And I have to tell, M N mat लीजिए, P Q ले लीजिए. It's better. ठीक है? P and Q. And we have to find what is the value of P, what is the value of Q. Now, for the first reaction, I will take R1 is equal to K into the initial concentration of NO2 to the power P and the initial concentration of F2 to the power Q. The rate is equal to 6 into 10 to the power minus 3. It will be equal to K concentration of NO2 to the power P and concentration of F2. Now, if you remember from the last class, I said that whenever you have been given the rate of reactions, you try to put them in similar exponents. 10 to the power minus 3 है यहाँ पे, तो इसको भी 10 to the power minus 3 में ले जाए. So if it is 10 to the power minus 3, then 12 हो जाएगा. ये 1.2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? For second experiment. This is for the first experiment, right? Yeah. For the second experiment, it will be 12 into 10 to the power minus 3 is equal to, अच्छा, rate of, ये हमने नहीं लिखा, sorry, NO2 और F2 का values लिखना है ना. So NO2 की value है 0.2 to the power P and इसकी है 0.5, sorry, 0.05 to the power Q. Now for the second experiment, this is 0.4 to the power P and this is 0.05 to the power Q. Now I will divide both of these equations. I will do rather 2 by 1 because 2 is larger. So 12 into 10 to the power minus 3 divided by 12 into 10 to the power minus, sorry, 1 is 6 into 10 to the power minus 3 is equal to K into 0.2 to the power P. नहीं, 12 में 0.4 है. 0.4, this one. 0.4 to the power P into 0.05 to the power Q divided by K into 0.4 to the power P. नहीं, 0.2. 0.05 to the power Q. Now this and this will get cancelled. K will get cancelled. 10 to the power minus 10 by 3 will get cancelled. 6 and 12 will be cancelled by 2. ये आया आप लोग को? राबिया इंसान समझ में आया जो कैंसिलेशन किया हमने? Yeah. है ना? आया ना? ठीक है. Now I can write 2 is equal to 0.4 by 0.2, right, to the power P, and I can now cancel 0.2 and 0.4 by 2 times. So I will have 2 is equal to 2 to the power P. यहाँ तक आया किसी का? साद एंड राबिया जी. यहाँ तक आ गया था खुद से? नहीं, हाँ, just now I did. यहाँ पहुंचने से पहले कर दिया. अच्छा ठीक है, just a second. राबिया, see here. It is not 1.2, it is 1.2 into 10 to the power minus 2 ना. इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 12 into 10 to the power minus 3 नहीं लिख सकते हैं. और अगर आपको यही समझ में आ रहा है तो 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 12 by 10. राबिया, yes or no? माइक खराब हो गया क्या आपका? ठीक है, चलिए. I always say that make the powers of 10 same ताकि आप कैंसिल आसानी से कर सकें, है ना? Now see here we have 2 to the power 1 and here we have 2 to the power P. So I can write P is equal to 1.
करेक्ट? जी सर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कौन से दो इक्वेशन लीजिएगा? जस्ट राबिया, आप कहाँ पे अटकी थी बताइए जरा। राबिया, माइक खराब हो गया क्या आपका? अच्छा, पी आ गया आपका, क्यों नहीं निकल रहा है? माइक इज नॉट वर्किंग। ऑन नहीं हो रहा है क्या माइक? माइक ऑन ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके फाइन, आई कांट हियर यू नाउ। ठीक ठीक, आई कांट हियर यू। पी की वैल्यू आ गई थी राबिया? क्यों में क्या लेंगे? Q1 इज इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक है, क्यू में इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देती ना। क्यू में तो आपको कोई सेम नहीं लग रहा होगा ना, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू एटलीस्ट टेक द वैल्यूज ऑफ F2. That means values of F2 should be different. That means I am going to take either the first equation and the last equation, or second equation and third equation. या तो हम फर्स्ट एंड थर्ड ले लें, या फिर हम सेकंड एंड थर्ड ले लें। टेल मी व्हिच वन शुड आई टेक? दोनों से आंसर आ जाएगा, बताइए किसकी वैल्यूज लें? एक्सपेरिमेंट 1 and 3 और 2 and 3? साथ आपने लिख लिया? साथ आपने लिख लिया या नहीं लिखा? यस साथ सर। लिख लिया। अरे भाई बताएं तो कौन सा लें, 2 और 3 या 1 और 3? जल्दी बोलें। Which experiment should I take, Rabia and Saad? 1 and 3 or 2 सर or 3? 1 and 3। 1 and 3, ठीक है। So for equation, for the first experiment, I can write the rate as 6 into 10 to the power minus 3. This will be equal to K times concentration of NO2, that is given as 0.2 to the power 1. Because why now, how can I write 1? Because we have calculated the power of P, that is equal to 1. So I will write 0.2 to the power of 1. बात समझ में आई सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Rabia and Saad, understood this? ठीक है। Into the concentration of F2, that is equal to 0.05 to the power Q, because we don't know what is Q. For the third experiment, I will write, फिर उसमें क्या लिख देंगे, 48 into 10 to the power minus 3. This 4.8 ना, तो इसको convert कर लेंगे. This will be equal to K into concentration of NO2, that is 0.8 to the power 1 into 0.10 to the power Q. Now I will do 3 divided by 1. So 48 into 10 to the power minus 3 divided by 6 into 10 to the power minus 3 will be equal to पहले 48 वाला K into 0.8 into 0.10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर नहीं होगा, माय बैड, 10 का पावर Q होगा। K into 0.2 into 0.05 की पावर Q. I can cancel these things. 6 8s are 48, right? And K will be getting cancelled. Now I will write it like this. 8 is equal to 0.8 divided by 0.2 into 0.1 divided by 0.05 whole to the power Q. This will get cancelled by 4 and this will get cancelled by 2. So I will get
8 is equal to 4 into 2 to the power q. अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 to the power q will be equal to 8 divided by 4 and 4 2s are 8. So 2 to the power q will be equal to 2 to the power of 1. अब यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी? q is equal to 1 आ गया. चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन. Let me know once you're done. राबिया एंड साथ समझ में, राबिया आपको समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑर्डर देन उसको फिर पुट कर लेंगे. ठीक है, सीधा सीधा आ जाएगा. नाउ राइट अनदर क्वेश्चन. ये खुद से कीजिए आपको कम से कम. दिस इज अ इजियर वन. एक चीज का ध्यान रखेंगे, 10 to the power 6, 10 to the power 6, और इसको क्या कर देंगे, इसको भी 10 to the power 6 कर दीजिएगा. ठीक है ना, तो आपको आंसर सही से आ जाएगा. या नहीं तो ये कर सकते हैं आप कि 10 to the power 6 ही कर लीजिए, ज्यादा बेहतर वही होगा. चलिए, आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स. आराम से कीजिए सवाल को, जब तक पानी वगैरह पी के आते हैं. ठीक है, आराम से लिखिए सवाल को, कीजिए. इफ यू गेट स्टक देन सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन ऑन व्हाट्सएप. उसके बाद फिर जो कुछ भी पूछना हो ना मुझे पूछिएगा. ठीक है, इफ यू गेट स्टक एनीवेयर, बट आई डोंट थिंक यू विल गेट स्टक. यू कैन सी दैट in experiment 1 and 2 concentration of Br2 is same. In experiment 2 and 3 the concentration of NO is same. तब तो 1 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या ले लेंगे, 2 और 3 ले लेंगे, हो जाएगा. चलिए प्लीज ट्राई दिस.
Rabia and Saad, let me know once you are done or if you get stuck. Okay. Okay, Saad. जी सर. किसी एक का भी ऑर्डर आया? राबिया एंड साद, एनओ या BR2 का किसी एक का आया? सर P half, sorry, yeah, P half आया. P हाफ? P हाफ P आया? P half. जी. नहीं, देखिए जरा कैसे, क्या आपने उल्टा कर लिया होगा. R2/R1 लिया होगा लेकिन वैल्यूज आपने उल्टे पुट कर लिए होंगे. देखिए जरा. अच्छा भेजिए, आप हमें भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए जी. जरा. साद, साद, am I audible? Yes sir. आपने वो कैसे लिख दिया कि P इज इक्वल टू हाफ? बताइए तो जरा. सर आपको भेजा व्हाट्सएप पे. हाँ वो ठीक है, लेकिन हाँ, आपने तो ठीक है, आपने लिखा है ना 4 इज इक्वल टू 2P, जी. फिर लिख दिया आपने P इज इक्वल टू हाफ. वो कैसे लिखा आपने? नेक्स्ट 4 का स्टेप जो हाफ. आपने किया. सॉरी,
ना, कुछ उसका कुछ पावर नहीं है ना है। p, 2 to the power p है ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 2। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस सेम हो गया, पावर से होगा 2 ना। जी। तो सर p इज इक्वल्स टू 2 राइट? हाँ लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं कैसे, जी समझ चलिए आ आप गया ठीक सर। है, बेस सेम कर देना दोनों का, फिर पावर सेम सेम हो जाएगा। अगले के लिए निकालिए। सर q इज इक्वल्स टू 1। 2 इक्वल्स टू 1 आ रहा है आपका, ठीक है, राबिया का भी q इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए आप लोग, रेट लॉस क्वेश्चन लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू एनओ की पावर 2 और बी आर की पावर 1। अब रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं ना, व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, आप यहाँ पे ले लीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -6 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 की पावर 2 इंटू 0.1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो, राइट, प्लीज देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के।
जी आंसर बताइए, ए का आंसर आया नहीं आया? राबियान साद, राबियान साद Sir, बताएं। 1.3 into 10 raised to -4. 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -4. -4 कैसे आएगा? -3 आएगा। देखिए k को क्या लिख सकते हैं? k विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइड बाई 0.1 के 0.1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, सही है? Yes. 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइड बाई 0.1 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1 का क्यूब। This will be 1.3 into 10 to the power -6 divided by 10 to the power -3, and this will become 1.3 into 10 to the power minus आपके पास हो जाएगा 3, है ना? And what will be the units? Unit यहाँ पे होगा mole inverse 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर 3 है ना, तो लीटर की पावर 2 होगा, मोल का इनवर्स 2 हो जाएगा एंड सेकंड इनवर्स हो जाएगा। प्लीज राइट दिस डाउन। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताएं। बोथ ऑफ यू आर डन? राबिया एंड साद, राबिया एंड साद हो गया? नहीं sir. साद आपका हो गया? Sure. So now we have seen units of k also, and we have seen another way of determining the rate law, that is by using the experimental data. Now write the third topic, that is mechanism. How can we use mechanism in order to get the rate law expression? Is right, mechanism of a reaction. Now, on the basis of mechanism, all reactions can be classified into two different categories. A reaction can either be elementary or it can be complex. Or it can be complex. Now, the thing about elementary reaction is that it occurs in single step. For a complex reaction, this occurs in multiple step. It occurs in multiple steps. ठीक है? Now, please write next. Write some points. The order of an elementary reaction
the order of an elementary reaction is whether ऐसे लिख दिए, इस मतलब कि can be determined by the balanced chemical reaction. Next point, the number of molecules taking part in elementary reaction the number of molecules taking part in elementary reaction determines the order of reaction. Determines the order of reaction. ठीक है. For example, अगर हम एक बात करें, for example, if I have 2A molecules and it is giving me product. So how many reactant molecules do I have? Tell me, Rabia and Saad. 2. Rabia, can you see that there are 2 molecules? Even though they are same type of molecules, but still what do we have? We have 2A molecules which are reacting to give what? To give the product. So for these type of reaction, I can write rate is equal to K into concentration of A squared. All of these are elementary reaction. Okay. If I have A plus B giving product, then R will be equal to K into the concentration of A into the concentration of B. If all of these are what? If these are elementary reaction. If these are elementary reactions. Now, the number of molecules taking part in a reaction is known as molecularity of reaction. Okay. So I will also write one more thing. Molecularity of an elementary reaction is its order. Whatever be the molecularity, that the same thing is what? That same thing is order of reaction. Now, next point you will write for complex reaction. Please see. Please see. In complex reaction, each step proceeds with different rate. That means if I have 2-step or 3-step reaction, then first step की speed कुछ और होगी, second की speed कुछ और होगी, third की speed कुछ और होगी. ठीक है? Now tell me one thing. Please don't write this. Tell me one thing. If you have jeans and you have a shirt and you have a t-shirt and you want to dry all of these 3 things, so a jeans take 15 minutes, shirt is taking 10 minutes, and t-shirt is taking 5 minutes. Now tell me what will be the total time taken. Give the answer in the chat. So tell me what will be the total time taken in order to dry the jeans, the shirt, and the t-shirt. 30 minutes. नहीं, राबिया आप बताएं. Total time taken to dry all of these 3 things. Rabia. Rabia, are you there? I can't see your answers. आप फिर से सोचे जरा साथ. Rabia, are you there? I can't see your answers. अच्छा ठीक है, साथ है. चलिए कम से कम. See here, साथ. जीन्स को अगर 15 मिनट ले रहे हैं तो सारे कपड़े तो 15 मिनट में सूख जाएंगे ना. टी शर्ट थोड़ी ना इंतजार करता रहेगा, या फिर जीन्स थोड़ी ना इंतजार करता रहेगा. टी शर्ट पहले सूख जाए, उसके बाद शर्ट सूखेगा, उसके बाद जीन्स सूखेगा. सब एक साथ सूख जाएंगे ना. Yes or no? हाँ. हाँ. अरे भाई हम क्या कह रहे हैं सुनिए.
जीन्स सुखाई आपने, टी शर्ट सुखाई आपने, शर्ट सुखाई आपने, ठीक है। ऑल ऑफ देम विल बी डन इन 15 मिनट्स, यस और नो? बताइए, 15 मिनट में सारे नहीं सूख जाएंगे? हाँ, यस। आई बात समझ में? जी समझ गया सर। समझ गए? ठीक। ना प्लीज लिसन, दैट मीन्स द स्लोवेस्ट वन, जीन्स सबसे स्लो है, एंड दैट इज डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ ड्राइंग। करेक्ट है गाइस? यस और नो साद एंड राबिया? Jeans is determining the speed of drying. Correct, sir? Yeah. So I can write. Please write here. See, the slowest step in a complex reaction determines the rate of reaction. Determines the rate of reaction. ठीक है? For example, जी साथ बताएं, कुछ बोल रहे हैं? नहीं। I have a reaction NO2 plus CO. It gives NO plus CO2. Now this is a complex reaction. In step 1, what happens is NO2 plus NO2, both of these react with each other and it gives NO plus NO3. Now this NO3 reacts with carbon monoxide and it gives CO2 plus NO2. This is the step 2. Now this first step is very slow. So the first step is going to determine the rate of reaction. The first step is going to determine the rate of reaction, and I can write the rate law. Sir, steps will be given for complex Yeah, reaction. steps will be ekdam. Yeah. ये free के marks हैं. NO2 की power 2, because here we have two different things. Here we have 1 NO2 and 2 NO2. So 2 NO2 का square. राबिया आपको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं. राबिया समझ में आ गया? ठीक है. Let us see a previous year question जो आया हुआ है. इतना लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताएं. इतना लिख लिया? नहीं। अच्छा, राबिया साहब आप लोग टेस्ट दे रहे हैं क्या? उसमें जब क्लास खत्म हो जाती है तो टेस्ट देते हैं ना आप लोग? राबिया साहब, अरे क्लास असेसमेंट टेस्ट जो होती है 5 क्वेश्चंस की, वो आप दे रहे हैं ना? या हाँ देते हैं ना आप लोग? ठीक. यस। चलिए इसको जरा कीजिए. क्या बीन गिवन कौन सा स्लो? बहुत आसान सा, 2 मार्क्स के आता है ये सवाल, बिल्कुल फ्री का. You can see what are the molecules that are in the slowest step. The molecules that are present in the slowest step, and then you will write them in the rate law equation. Can you please do this down? Send the answer on my WhatsApp. I am coming in 2 minutes.
समाधान नाबिया हो जाएगा? सर हो गया। भेजिए आंसर फिर। भेज दिया क्या आपने? अच्छा भेजना है, 1 सेकंड। हाँ जी भेजिए। सर भेज दिया। जी सही है। बस बस इतना ही लिखना है और इतना ही लिख के आइएगा, ठीक है? राबिया आप ही भेजिए आंसर। आपने क्या लिखा है जरा आप ही भेजिए। सर सही था गलत? सही है, सही सही है। कुछ गलत ही हो नहीं सकता उसमें। कुछ गलत कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, नहीं ना। वन वर्ड अच्छा आंसर। बस हम ये जानना चाहते हैं कि आर इज इक्वल टू के लिखा है आपने ना, वो हमें थोड़ा सा एक्स की तरह दिख रहा है, के लिखा है लेकिन आपने, राइट? या के। ठीक है सही है। बस। राबिया आर यू देयर? आप जवाब आप अच्छा ठीक है भेजा आपने, सॉरी। बस बिल्कुल यही आंसर लिखने हैं, ठीक है? वेरी गुड। इसमें वाई पूछा है क्या? वाई नहीं पूछा ना। आप अगर वाई नहीं भी लिखिएगा राबिया कि वाई इज द फर्स्ट स्टेप रीडिटरमाइनिंग, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बहुत सही, वेरी गुड। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। नाउ वी हैव डन दिस थर्ड पार्ट आल्सो, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, एंड आई विल बी डूइंग दिस नेक्स्ट टॉपिक टुमारो ओनली, ठीक है? आज स्टार्ट करके कुछ इसका फायदा नहीं होगा, ठीक है? दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट्स आप लिख लें किसके बारे में, मॉलिक्युलरिटी के बारे में, ठीक है? थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए मॉलिक्युलरिटी के बारे में, और जब तक हम आपका टेस्ट एक्टिवेट करवा देते हैं। सर कैन यू रिपीट अगेन? मैं सुना नहीं आप क्या बोले अभी। हम बोल रहे हैं कि आई विल जस्ट राइट अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट द क्लास विल बी डन। आई एम जस्ट गेटिंग द टेस्ट एक्टिवेटेड। आज का जो टेस्ट है ना मैकेनिज्म के ऊपर, ओके। वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। जी सर। राइट द टॉपिक, molecularity of a reaction, right? Molecularity of a reaction. Is right, it is defined as the sum of number of molecules which must collide simultaneously
in an elementary reaction. ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट देखिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की जो बात है दैट इज ओनली फॉर अ एलिमेंटरी रिएक्शन. तो प्लीज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. प्लीज राइट मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन is only applicable to elementary reaction, and it has no meaning for complex reaction. Now, this is also an answer to the question, what is the difference between molecularity and order of reaction? तो जब भी आपसे पूछा जाए ना कि what is the difference between molecularity and order of reaction, you will write molecularity of a reaction is only applicable to elementary reaction, and लिखिएगा ये and है, इसमें and it has no meaning for complex reaction. ठीक है, और आप लोग एक होमवर्क लिख लीजिएगा, राइट differences between molecularity and order of reaction. ठीक है, चलो. Sir, can you scroll up? Yeah, sure. Yeah. Please. किसी को भी दे दीजिए, राबिया आप लर्नियो को भेजिएगा तो ज्यादा बेहतर है. ठीक है, फिर गोइंग टू सेंड इट टू लर्नियो. अच्छा, ये जो होमवर्क हमने दिया है ना, राइट डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज इन एडिशन ऑफ वॉट एवर होमवर्क यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम लर्नियो. ठीक है, बिकॉज लर्नियो में जो भी होमवर्क रहते हैं दैट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है, इस वजह से इसके बारे में लिख रहा है. ठीक है, इट इज इन